हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका फिजियोलॉजी की पाठशाला के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब, व्हाई डू वी यॉर्न। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए, इंटरेस्टिंग लगे, तो प्लीज़ फिजियोलॉजी ई पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं यॉर्निंग की। यॉर्निंग, जैसे हिंदी में जमाई या उबासी आना भी कहते हैं, इज अ सडन इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग एक्ट विच लास्ट अराउंड 6 सेकेंड। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट इज ऑफ अ ड्यूअल नेचर, दैट इज इट इज बोथ अ मोटर रिफ्लेक्स एज वेल एज एन इमोशन। यॉर्निंग के बारे में मेडिकल बुक्स या जर्नल्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिल पाएगी। इसीलिए द एक्ट ऑफ यॉर्निंग रिमेन्स अ मिस्ट्री फॉर मोस्ट ऑफ अस टिल डेट। हम में से ज्यादातर लोग यॉर्निंग को थकान या बोरियत के साथ जोड़कर देखते हैं, पर शायद ये बात पूरी तरह सच नहीं है। ऐसा इसलिए बिकॉज द एक्ट ऑफ यॉर्निंग इज प्रेवलेंट थ्रू आउट द एनिमल किंगडम। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इट हैज इवन बीन रिकॉर्डेड इन अ ह्यूमन फीटस इन यूट्रो। Dr. Robert Provine has done much work in yawning since the last 30 or 40 years, and even he has remarked that yawning has a dubious distinction of being a common yet least understood human behavior. अब तक जो थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है उससे ये पता चला है कि there are at least two centers in the brain which are involved in yawning. Number one are the reticular neurons in the brainstem, and the other area is the oxytocin secreting paraventricular neurons of the hypothalamus. Yawning can either be physiological in some cases or it may be induced by some pathological conditions. Among the physiological causes, the important ones are drowsiness or boredom, watching, thinking, or even reading about yawns, heavy meals, disturbed sleep, and intake of sedatives. While the pathological conditions which are associated with yawning are migraine, Parkinsonism, brainstem lesions or tumors, and some psychiatric disorders such as anxiety and depression. यॉर्निंग एक्ट के 3 फेजेस होते हैं। The first phase is active inspiration, which is characterized by 3 events. Number one is the widely open mouth, then is dilation of the laryngopharynx, and number three is the lowering of the hyoid bone. And you can see all these three very clearly in this comparative analysis of radiographs taken before and during yawning. During the second phase, which is also called the acme phase, there is seen a widely open mouth and closure of eyes, contraction of face and neck muscles, wrinkling and prominence of the nasolabial folds, and stretching of limbs, which is also called pandiculation. The third phase is marked by this typical expiratory sound, which comes from the palate and throat, along with normalization of the facial characteristics. आप सबने नोटिस किया ही होगा कि अगर हम किसी को यॉन करता हुआ देखते हैं तो खुद को भी यॉनिंग होने लगती है। ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ द कंटेजियस नेचर ऑफ द यॉन्स। इन फैक्ट द कंटेजियसनेस ऑफ यॉन्स वाज नोटेड इन अ वेरी ओल्ड फ्रेंच प्रोवर्ब, जिसका मतलब है वन मैन्स यॉन ट्रिगर्स यॉनिंग इन 7 others। और यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल स्टार्ट यॉनिंग merely by watching, listening और reading about yawns। इसलिए डोंट बी सरप्राइज्ड इफ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको भी अगर 4-5 बार यॉर्निंग आ जाए। द कंटेजियसनेस ऑफ द यॉर्निंग एक्ट इज बिकॉज ऑफ इट्स रूट इन एम्पथी। एम्पथी माने सहानुभूति। इस बात का एविडेंस मिलता है नॉर्सिया और पलागी की स्टडी से, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोर कंटेजियस यॉन्स वर ट्रिगर्ड इन देयर स्टडी पार्टिसिपेंट्स when they watched yawns among their family members, followed by friends, acquaintances, and least yawns were triggered in the participants when they watched yawning in strangers। मतलब कि जितना दो लोगों में इमोशनल क्लोजनेस ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी कंटेजियस यॉर्निंग आने की। Let's try to understand the neurological basis of contagious yawning. Contagious yawning is thought to be due to activity in the mirror neuron system of the brain। और ये जो mirror neuron systems है, ये प्रेजेंट होता है पेराइटल और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में ये 2 रेड सर्कल्स में देख रहे हैं। तो होता क्या है कि जो विजुअल इनपुट है यॉर्निंग की, इट इज रिसीव्ड बाय सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस,
which then further relays it to the mirror neuron system, which then, among a very heavy two-way traffic, tries to decide the what, why, and how of the observed act of yawning, and thereafter triggers yawns in the observer itself. अगर आप मिरर न्यूरॉन सिस्टम के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आई बटन को क्लिक करके आप मिरर न्यूरॉन सिस्टम के हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं. The radiological evidence for the role of mirror neuron system in contagious yawns was provided by Nahab and Sharman, who noticed increased functional MRI activity during contagious yawning within the ventromedial prefrontal cortex and bilateral superior temporal sulcus, while the empirical evidence was given by Miller-Anderson and Senju et al., who recorded absence of contagious yawns in subjects with immature frontal cortices, that is preschool children, and those with autism in which there is dysfunction of the frontal cortex. Let's now look at the possible significance of the yawning act. Various researchers have assigned different meanings of yawns in different animal species. For example, in lions, it may serve as a signal for other lions or to help wake up the muscles of the lion. In chimpanzees, it may suggest social bonding and empathy. In fish, it may be an act of respiration or clearing debris from the gills. And in case of dogs, it may signify relaxation or even jaw stretching. In humans, three important functions of yawnings are suggested. Now let's discuss them briefly. Yawning is commonly associated with laziness and boredom. When we are sitting in an extremely boring environment, for example didactic lectures or in some boardroom meeting, we tend to lose focus and start feeling sleepy. At this moment, our subconscious mind makes a last-ditch effort to retain attention by triggering a yawn. In fact, it is due to this very reason that activities that are less engaging, such as driving a car on a straight, traffic-less road or during lectures, trigger more yawns, while more engaging activities such as cooking, talking, or even playing games trigger almost negligible amount of yawns. So, yawning might subserve arousal. Corey et al. Noted that the autonomic changes which were observed post yawns were exactly similar to those observed by Barry et al. After caffeine intake. और वो कौन से changes थे? Increased alpha waves in the EEG, increase in heart rate, increase in muscle tension and increase in galvanic skin resistance. और अगर कैफीन, जिसको तो हम ऑलरेडी एक वेल नोन सीएनएस स्टिमुलेंट मानते हैं, वो ये चीजें करवा सकती है, चेंजेस करवा सकती है, और यॉनिंग में भी अगर यही चेंजेस देखे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यॉनिंग माइट बी अ मैकेनिज्म ऑफ अराउजल एंड नॉट स्लीपीनेस. अब मैकेनिज्म क्या है अराउजल का? दिस इज बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ कैरोटिड बॉडीज. होता क्या है कि कैरोटिड बॉडीज जो कि नेक में होती हैं, they get compressed during the contraction of the neck muscles while yawning, और इससे कैरोटिड बॉडीज का इस्कीमिया हो जाता है, और इस इस्कीमिया से कैरोटिड बॉडीज they become activated and start sending signals to the nucleus of tractus solitarius in the medulla via branches of ninth nerve and increase the sympathetic activity throughout the body, और यही increase sympathetic activity कारण बनती है arousal का. Besides arousal, another popular theory states that yawning might serve as a brain coolant उन conditions में जहां brain का temperature बढ़ जाता है because of increased neuronal activity, जैसा कि hyperthermia में, anxiety में, epilepsy में या फिर head trauma में. Experimental evidence in favor of this theory comes from 3 studies, 2 of which were done in animals and 1 was done in humans. Gallup et al. Observed increased yawning in parrots with a rise in ambient temperature, जबकि शॉपनॉक्स et al. ने रिकॉर्ड किया a progressive rise in the brain temperature of rats until onset of yawns, or after which the temperature values of the brain they started to decline over the next 3 minutes. Gallup and Gallup recorded more yawns in their subjects on whose heads warm packs were placed as compared to
fewer yawns in subjects on whose heads cold packs were placed. अब एग्जैक्टली कैसे यॉनिंग कूल डाउन करती है ब्रेन को, ये तो अभी तक नहीं पता चला है, पर कुछ रिसर्चर्स ने ये प्रपोज किया है कि ड्यूरिंग yawning there is contraction and relaxation of face and jaw muscles which leads to increased muscular blood flow and entry of large amount of cool air within the respiratory tract which leads to heat dissipation from the skull. A third important function prescribed to yawning is equalization of the middle ear pressure. Now, many of us have witnessed a sudden heaviness in the ears while traveling to hill areas or in aeroplanes. Usually, a yawn is triggered at some moment, leading to sudden release of pressure from the ear और वो heaviness एकदम से खत्म हो जाती है. अब ऐसा क्यों है? This is because कि जो previously eustachian tube block हो जाती है, it is opened up by sudden contraction of the tensor tympani and stapedius muscles in the middle ear, which equalizes the air pressure between the atmosphere and the middle ear cavity. इसीलिए yawning को एक डिफेंस रिफ्लेक्स भी कहा गया है फॉर द मिडल ईयर बाय विंथर एट ऑल. चलिए लास्टली कुछ साइकोसोशल कॉनोटेशंस ऑफ yawning भी डिस्कस कर लेते हैं. ऐसा कहा गया है कि those who consciously suppress their yawning are actually trying their best to hide their boredom, while some other people who tend to yawn noisily and loudly may actually be trying to convey their displeasure towards an ongoing situation in a subtle manner. So, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. मिलेंगे अगली बार एक और नए वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.